Hello students, so today I am going to start the last examples, the remaining examples of exercise, miscellaneous exercise 4. In previous some video lecture, we completed first 3 examples of this exercise. So these are the last 3 examples of this topic, definite integration. Okay, before starting this example, let us define some concept. Let us introduce some concept of definite integration, that is reduction formulae. Reduction formulae. This formula are without proof. So integration from 0 to pi by 2 sin raised to nx dx or is equal to integration from 0 to pi by 2 cos raised to nx dx. There are some condition for this formula. That condition is this limit must be 0 to pi by 2, integration must be 0 to pi by 2, लोअर लिमिट 0 होना चाहिए, अपर लिमिट पाई बाई 2 ही होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला एग्जिस्ट है. और दूसरा, ये n पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव और इंटीजर होना चाहिए, मीन्स आइदर निगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर, बट दैट मस्ट बी आइदर इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर, नॉट निगेटिव इंटीजर. इज इट क्लियर? एंड दिस ओनली फॉर साइन एंड कॉस, both sin and cos, not sec, cosec and tan and cot. So ये n इंटीजर ही होना चाहिए और वो पॉजिटिव इंटीजर ही होना चाहिए, not fraction, not negative. Is it clear? And this only for sin and cos. So formula. So first case, n is odd, and second case, n is even. If n is odd, this is n minus 1, n minus 3, n minus 5, so on, divided by n minus 2, n minus 4, so on. If n is odd, if it is n is even integer, then n minus 1 into n minus 3 into n minus 5 divided by n into n minus 2 into n minus 4 only multiplied by pi by 2 for even integer, even power. So we'll take examples on that. So this is the first example. एक even लेंगे, एक odd लेंगे, either sin और cos. sin का odd लेंगे 0 to pi by 2, odd integer हम लेंगे sin raised to 5x dx. By regular method, this is not easy to evaluate this type of integrals, but we can apply here reduction formula. This formula are without proof. sin raised to 5 सिर्फ चेक करना है 0 to pi by 2 है क्या, 0 to pi by 2 ही होना चाहिए. ये इवन है या ऑड है, ये चेक करना है, ऑड पावर है. साइन और कॉस दोनों में से एक होना चाहिए. sin raised to 5 का इंटीग्रेशन एंड cos raised to 5 का इंटीग्रेशन सेम होगा, इक्वल टू साइन. ओके, सो n 5 है, 5 minus 1 4, 5 minus 3 2, 5 minus 5 करना नहीं है, स्टॉप करना है, डिवाइडेड बाय 5 minus 2 3, 5 minus 4 1. ये उसका आंसर. सो आंसर इज व्हाट, 8 by 15. वन मोर एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to pi by 2, 0 to pi by 2, ये sin raised to 5 था, अब cos raised to 6 करेंगे, इवन पावर. सो इवन पावर का ऑड पावर का सेम फॉर्मूला, सिर्फ इवन पावर है तो पाई बाय 2 मल्टीप्लाई करना है, राइट. सो 6 minus 1 5, 6 minus 3 3, 6 minus 5 1. अब 6 minus 7 नहीं करना, यहाँ पर डायरेक्शन में 7 भी है, 6 minus 7 minus 1 होगा, वो नहीं लाना है, वहीं पर स्टॉप करना है, डिवाइडेड बाय ये 6 minus 2 4, 6 minus 4 2. अब 6 minus 6 0 नहीं करना है, यहाँ पर वो स्टॉप करना है, इनटू पाई बाय 2. 5 3 2 6, 5 pi divided by 2 into 2 4, 4 into 4 16, 16 into 2 32,
5 पाई बाय 32, ये उसका आंसर. If it is even integer or odd integer, but that should be positive integer, and this only for sine and cos, and this only for 0 to pi by 2. Is it clear? So this formula is known as the reduction formula. Okay, so we'll take examples. अब इसमें example है यहाँ पर एक sin cube x है, right? So ये basically MST CET JEE ये जो MCQ solve करते टाइम ये shortcut बहुत ही important है. Okay, so we'll take example now. Now let us start the first example of this exercise. So this is first. So write given. A given part है. Integration from 0 to a root x dx is equal to 2 times a 0 to pi by 2 sin cube x dx. So given integration from 0 to root x 0 to a of root x dx is equal to 2 times a 0 to pi by 2 sin cube x dx by reduction formula. Integration root x raised to half. X raised to half का integration we will write directly x raised to 3 by 2 divided by 3 by 2 from 0 to a 0 to a is equal to 2a sin cube x का, so it is odd power, so first 3 minus 1 2 3 minus 3 stop it divided by 3 minus 2 1 3 minus 2 कितना 1, ये इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली. So here numerator ये upon 3 by 2 into 2 by 3 in bracket a raised to 3 by 2 upper limit minus 0 raised to 3 by 2 0 is equal to 4a divided by 3. 2 into 2a is 4a. These 3 and these 3 cancel. So here 2a raised to 3 by 2 is equal to 4a. ये 2 और ये 2 cancel. a raised to 3 by 2 का मीनिंग होता है a into root a minus 2a is equal to 0. ये 2 to the 4 cancel. a raised to 3 by 2 means a root a minus 2a. Taking a common now here. This is a common. In bracket root a minus 2 is equal to 0. The first value of a is equal to 0. Root a minus 2 is equal to 0. Root a is equal to 2. a is equal to 4. So there are two values of a, that is 0 and 4. Now we have to find this value. Then what we have to find? a2 a plus 1 x dx which is equal to, ये फाइंड करना है. सो फर्स्ट हम 0 लेंगे when a is equal to 0. So lower limit 0, upper limit 1, x dx x square by 2 from 0 to 1 is equal to 1 by 2 minus 0 by 2. So answer is 1 by 2. First, right? Now when a is equal to 4, और एक वैल्यू a की वैल्यू 4 यहाँ पर रखना है. नीचे 4 ऊपर 5 बिकॉज a प्लस 1 है. x dx इसका इंटीग्रेशन x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 4 to 5 1 by 2 5 स्क्वायर 25 4 स्क्वायर 16. पहले ऊपर 5 पुट किया, 5 का स्क्वायर 25. नाउ 4 पुट किया, 4 का स्क्वायर 16. 1 by 2 बाहर लिया. 25 minus 16 is 9. So answer is what? 9 by 2. So there are two answers of this. One is 1 by 2, second is 9 by 2. Because we get
two values of a is 0 or a is 4. Okay, so it's very simple. So integration of sine cube x we write directly find by using this reduction formula. In reduction formula, first of all we have to check the limits of integration, that is 0 to pi by 2, and second the power must be positive integer, that is even odd integer 3. So आर में क्या करना है, वही फॉर्मूला सिर्फ u1 में मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 2 करना है. So this is the solution of this first example of this number 4. We will take now second. See the second example of the same exercise, miscellaneous exercise 4. Second example. He has given, we have to find unknown k. This part is given, integration is given now. So given integration from 0 to k 1 upon 2 plus 8x square dx is equal to pi by 16. This is given part, हमें k find करना है. Right, this is a quadratic. First of all make the coefficient of x square as unity. So 2 by 8 means 1 by 4 plus x square dx is equal to pi by 16. Simple process of this integration. Now it is 1 by 8. Integration from 0 to k 1 by 4 is 1 by 2 square plus x square dx is equal to pi by 16. One upon a square plus x square 1 by 1 upon 1 by 2 means 2 by 1. Tan inverse of, तो ऐसा लिखो 1 upon 1 by 2 tan inverse of x upon 1 by 2 from 0 to k is equal to pi by 16. ये 2 ऊपर जाएगा 2 by 8 tan inverse of 2 ऊपर जाएगा 2x from 0 to k is equal to pi by 16. So this is equal to 1 by 4 tan inverse of 2k minus tan inverse of 0 is equal to pi by 16. Tan inverse of 2k minus tan inverse of 0. So tan inverse of 0, ये 4 cancel, 4 4s are 16 cancel. Tan inverse of 2k is equal to pi by 4. So therefore pi by 4 ये एंगल tan inverse की 1 वैल्यू के होता है. So it is tan inverse of 1. Pi by 4 means what? Tan inverse of 1. Tan inverse automatically eliminate. What is 2k? 2k is equal to 1. K is equal to what? 1 by 2. It is a simple process of evaluating such type of integral. Only here we have to find the unknown k. Baki everything is very clear, very simple. We will take the last example now. This example. So here first of all write given part of the example number 3rd. So given part is f of x. F of x is a plus bx plus cx square. This is f of x. Now इसका लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करेंगे. इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 f of x dx is equal to integration from 0 to 1 a plus bx plus cx square dx. f of x तो गिवन है, सिर्फ उसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है. इंटीग्रेशन ऑफ ax इज a का इंटीग्रेशन ax bx square by 2 cx cube by 3 from 0 to 1. अपर लिमिट पुट करो a into 1 b into 1 c into 1 minus 0 a into 0 b into 0 c into 0. हम लिमिट कहाँ पर पुट करते हैं? वेरिएबल x की जगह पर 1 रखना है, एक बार 0 रखना है. 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब इज एब्सोल्युटली 1. सो दिस इज a plus b by 2 plus c by 3 equation first. This is left hand side of our proof. 0 to 1 f of x dx. Okay,
नाउ फर्स्ट एफ ऑफ 0 फाइंड करेंगे, एफ ऑफ 1/2 फाइंड करेंगे, एफ ऑफ 1 फाइंड करेंगे. सो एफ ऑफ 0 a प्लस b इंटू 0 प्लस c इंटू 0 स्क्वायर. सो इट इज a. सो एफ ऑफ 0 इज a. एफ ऑफ 1/2 फाइंड करेंगे. सो हियर वी कम्स. पहले एफ ऑफ 0 फाइंड किया, मीन्स x की जगह पर 0 रखना है, फिर सिर्फ एफ ऑफ 1/2. एफ ऑफ 1/2 इज इक्वल टू a प्लस b इंटू 1/2 प्लस c इंटू 1/2 स्क्वायर. सो a प्लस b/2 प्लस c/4. ना एलसीएम मेथड से सॉल्व करेंगे. इट इज c/4. सो 4 इज द एलसीएम हियर. ये तो सिर्फ ऐसे रखेंगे उसको, 4a प्लस 2b प्लस c/4 वैसे करेंगे. नहीं तो लिव एज इट इज. दिस इज एफ ऑफ 1/2. कोई और सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. अब एफ ऑफ 1 करेंगे. एफ ऑफ 1 मीन्स जस्ट वी हैव टू रिप्लेस x by 1. So a plus b into 1 plus c into 1 square. So a plus b plus c. This is f of 1. Now what? Complete right hand side. What is right hand side? 1/6 in bracket f of 0 4 times f of 1/2 plus f of 1. What is f of 0? A. 4 times f of 1/2 a plus b/2 plus c/4. This is f of 1/2. What is f of 1? a plus b plus c. 6 से मल्टीप्लाई करो a/6, नहीं तो ये 1/6 बाहर ही रहने दो. इन ब्रैकेट a 4 से मल्टीप्लाई करो 4a प्लस 2b प्लस c प्लस a प्लस b प्लस c. 4 से अंदर मल्टीप्लाई करो 4a 2 कैंसल 2b 4 कैंसल ओनली c प्लस a प्लस b प्लस c as it is. Okay, now it is 1/6 in bracket a plus 4a plus a 6a 2b plus b 3b c plus c 2c. Now finally 6 से डिवाइड करो each term by 6. a plus b/2 plus c/3. This is equation second. Equation second. Now see the equation first and equation second. Both having right side same, a plus b/2 plus c/3. It means absolutely this is equal to this. So left hand side is equal to right hand side. So this is the last example of miscellaneous exercise topic number 4, definite integration. So here, so the most important part of definite integral calculation, that is definite integration, is completed here, but one more part is remaining of this integral calculus, that is applications of definite integration. There are two parts of in calculus. One is differential calculus and second is integral calculus. डिफरेंशियल कैलकुलस में 2 टॉपिक है, एक है डिफरेंशिएशन, दूसरा है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव. इंटीग्रल कैलकुलस में 3 पार्ट है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशंस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन. सो हमारा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हुआ है, अब ये डेफिनेट इंटीग्रेशन भी कंप्लीट हुआ है. नाउ सिर्फ इसका एक स्मॉल टॉपिक बाकी है, बहुत ही छोटा टॉपिक है, सिंगल एक्सरसाइज का है वो भी. सो दैट टॉपिक इज व्हाट? एप्लीकेशंस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन. So we'll take on next video lecture. So today I will stop here. Thank you very much.